How we feeling tonight? Just clap your hands in the air. Just clap your hands in the air. 大个节目大，滴答，大个节目大，滴答，大个节目大咚哒，咚咚啦啦咚咚哒啦啦啦咚咚那个吧，咚咚咚啦滴哒啦啦啦啦啦咚咚那个吧，哒啦咚哒哒啦滴啦啦哒啦啦哒啦啦。Ta ta ta dum ta 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 dum ta ta dum 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 ta na na di na 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 dum ta na di na gama gama ma gama pa ma ga sa sa ta na di na gama gama ma gama pa ma ga sa sa ta na di na gama gama ma gama pa ma ga sa sa. Coming out for my lead, I'm coming out for my lead. Gama gama gama. Gama bama gamaza, gama bama gamama, gama bama gamaza, mapani da gamama, gama bama gamaza, gama basa gamama. I'm in love with your body, oh why, oh why, oh why, oh why. Oh why, oh why, oh why, oh why. Panizaza, panizaza, panizaza. Oh why, oh why, oh why, oh why. Gariza, gariza, magariza, gariza. Oh why, oh why, oh why, oh why. How we feel when you stand? Here we go, here we go, here we go, here we go. Sani da ba mani ba magari magari sani sa ga ma bani sani da magari sa la la di di la la di di dhum da la 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 dhum dhum da la 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 dhum da la 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 dhum dhum da la la dhum da la la dhum dhum da la la. Coming out for my lead. Gama bama gama, ma banizaza. Gama bama gama, garizaza. Gama bama gama, gariza ni gama gariza. Gama baniza. Let me hear everybody. Oh why, oh why, oh why, oh why. Oh why, oh why, oh why, oh why. Nini bama gariza. Oh why, oh why, oh why, oh why. Banizaza, banizaza, banizaza. Oh why, oh why, oh why, oh. Nisa gari, nisa why, nisa di bama. Oh why, oh why, oh why, oh. Coming out for my lead.
My name is Amneet Burji, and this is my husband, Iqbal Burji. When we moved here to Houston, we started educating ourselves about the community around us and found that there was definitely a need for fosters and people to step up to take care of stray animals and overpopulated shelters. I think as, you know, a 32-year-old Sikh American individual, I always try to figure out, how do you balance tradition with evolution? How do you figure out how you want to continue the principles of, you know, the beauty in your religion and your culture, and how do you also modernize that? I think that's what makes it so beautiful in this country, is that when you actually sit and talk to somebody like a non-Indian from Houston who has a cowboy hat, and you have a, you know, thug of your own, you find out that you have a lot of stuff in common. You know, all it takes is just dialogue. I think how we care for the voiceless in our society, whether it's babies, children, or dogs, or other animals, says a lot about us. And so I think that is something that keeps us going. Like, that's really what we ultimately will be judged on, is, you know, those that can't speak for themselves, how are we actually caring for them? This is home. This is us. We're entrepreneurs and comedians. We're engineers and authors. From coast to coast, we've been making our mark. Rooted by history, woven with love, with bright eyes towards the future, our story has just begun. Go Houston, how we doing tonight? I can't hear you. How we doing tonight? जैसे दूध में है मिठास और रंग अपना है खास, दूध में की है हिंदुस्तानी आवाज। जैसे दूध में है मिठास और रंग अपना है खास, दूध में है अमरीकी है हिंदुस्तानी आवाज। जब हम भारत से आए, इस धरती के हो पाए, इस देश के अपने बन के हैं, हाथ सभी से मिलाए। हमें की सुर है आज, just say it loud. We are proud of who we are. Let's say it loud. Let's say it loud. We are proud of who we are. Just say it loud. We are proud of who we are. Just say it loud. Just say it loud. We are proud of who we are. हर चेहरा यहाँ खास, सबकी अलग पहचान है। डॉक्टर टीचर ही नहीं, आर्मी भी हमारी शान है। हर चेहरा यहाँ खास, सबकी अलग पहचान है। टीचर भी नहीं, आर्मी भी हमारी शान है। सपना ऐसा सबका जो हर दिल में समाए, साथ मिलकर हम सभी क्यों ना आगे बढ़ जाए। हर दिल की एक आवाज। Say it loud. We are proud of who we are. Just say it loud. We are proud of who we are. Let's say it loud. We are proud of who we are. Let's say it loud. We are proud of who we are. Let's say it loud. We are proud of who we are. Let's say it loud. Just say it loud. We are proud of who we are.
Let's sail on, sail on. We are proud of who we are. Let's sail on. We are proud of who we are. Ladies and gentlemen, please turn your attention to the stage and welcome the Mayor of Houston, Sylvester Turner. What an exciting day to be in the city of Houston. I am deeply honored. I'm deeply honored as the mayor of the city of Houston to welcome you to Houston. Should we start? Should we not? Huh? And for those who are visiting our city, let me say welcome to each and every one of you. Houston is the most diverse city in the United States of America. In Houston, we say howdy in more than 140 languages, and this morning we are saying howdy to Prime Minister Modi. In Houston, 1/4 of us come from another country. In Houston, we build and value relationships, and we value our relationship with India. In
In Houston, where I was born and raised, you find open-ended opportunities. No wonder it is a place that has attracted about 200,000 sons and daughters of the Indian diaspora. Immigrants and first-generation Americans are the heart and soul of Houston. Here they can dream it and they can achieve it, and they do it every single day. The contributions of the Indian diaspora to our city are huge in education, science and technology, business, public service, medicine, culture, and the food is simply outstanding. India is the fourth largest trading partner with Houston, and many Indian companies have a headquarters right here. Today, we are humbled by the Prime Minister's choice to visit our great city. And we are honored to welcome the President of the United States to our city, along with congressional leaders and elected officials from across the country. 10 months ago, I led a Houston trade mission to India. I made new friends and business connections for our city. In New Delhi, I walked the garden path that Mahatma Gandhi walked just before he was killed. I visited with the Vice President of India. Initially, it was supposed to be a 10-minute visit, but it ended up lasting for 45 minutes. And today, the Prime Minister comes to our city. This is recognition of the Indo-American community right here in the city of Houston and the surrounding area and our city as a whole. Welcome to Houston, Mr. Prime Minister, and welcome to all of you here today. And now I have the distinct pleasure of welcoming the congressional delegation of congressional leaders from all over the country, right here, if they will now come forward. Please welcome the congressional delegation. You can do better than that. Give them a Houston welcome. From the state of Wisconsin, Representative Glenn Grotham. From the state of Texas, Representative William Hurd. From the state of Pennsylvania, Representative Brian Fitzpatrick. From the state of Texas, Representative Sheila Jackson Lee. From the state of Texas, Representative Brian Babbitt. From Illinois, Representative Danny Davis. From South Carolina, Representative Joe Wilson. From the state of Texas, Representative Al Green. From the state of Texas, Representative Kevin Brady. Okay, there's only two more. From the state of Texas, Senator Ted Cruz. From Mississippi, Senator Cindy Hyde-Smith. From the state of Texas, Senator John Cornyn. From Maryland, Representative Steny Hoyer. From Illinois, Representative Raja Krishnamurthy. From North Dakota, Senator Kevin Cramer. From Kentucky, Governor Matt Bevin.
From New York, Representative Carolyn Maloney. From the state of Texas, Representative Pete Olson. From North Carolina, Representative David Rouser. From the state of Texas, Representative Mark Vesey. From New York, Representative Tom Suozzi. From the state of Texas, Representative Michael Cloud. And from California, Representative Linda Sanchez. Join me in welcoming the junior senator from the state of Texas, Ted Cruz. To Prime Minister Modi, to President Trump, to representatives across the United States, across India, across the world, welcome to Texas. Today is a celebration. It is a celebration of the friendship between America and India, a strong, resolute, and growing friendship. Our nations have interests that are intertwined. We share a history. We share cultures. We share language. We share values. India is the largest democracy on the face of the earth. And America is proud to be your friend. Today is also a celebration of the incredible Indian American community here in the United States, and especially here in the great state of Texas. We have over 500,000 Indian Americans who call Texas home. And the Indian American community here in Houston and Texas and across America is wonderfully diverse, is vibrant, believes in small business, in opportunity, believes in freedom. And through all of Texas and all of America, we say thank you for the incredible contributions of the Indian American community. As a lifelong Houstonian, it is particularly meaningful to me, and I know to many here, that Prime Minister Modi chose to come to Houston, Texas, the most diverse big city in America, and the most entrepreneurial city in America. And I look forward to decades and centuries of closer economic and military and diplomatic ties of friendship between Texas and India, between America and India. We are friends, and today is celebrating that friendship. And now, a few words from the senior senator from Texas, founding chairman of the Senate India Caucus, our very own John Cornyn. We know everything is bigger, and we think better in Texas.
And this is certainly a Texas-sized welcome for Prime Minister Modi. When his trip was first announced, folks on the West Coast and the East Coast wondered, why Texas? They expected a trip maybe to the Silicon Valley or perhaps to Washington, D.C. And while those are great places to visit, nobody has fueled our country's relationship with India like Texas. And I mean that literally. Texas helps power India with American oil and gas. And India and U.S. trade just keeps getting stronger day by day by day. After a near 4-decade ban on U.S. exports of crude oil was lifted, Texas supplied the first American crude to India. And today, India is increasingly running on American natural gas, much of which comes from the Lone Star State. And while that's far and away our largest export, it's not the only one. Texas ranks as India's second largest trading partner in the U.S., right behind California. But we are catching up. But for as deep as our economic ties are, our cultural ties are stronger. Texas is home to a vibrant Indian diaspora, with more than 150,000 Indian Americans living in the Houston area alone. Indian culture is woven into the fabric of our state, and we're proud to celebrate the contributions of this community with Prime Minister Modi today. And as further evidence, you might want to check out my occasional adventures in Indian cooking on Instagram, if you haven't seen that. India is one of our most important friends and partners. We share, as Senator Cruz said, common values: freedom, democracy, free enterprise, and we'll continue to look for new opportunities to deepen that relationship. Through improved trade and defense cooperation and economic development initiatives, we'll keep finding ways to promote our shared values and strengthen our ties. I could not be more excited to join all of you and President Trump today to celebrate the ever-growing U.S.-India relationship and welcome our good friend, Prime Minister Modi, to the energy capital of the world, Houston, Texas. Now, I'm going to need your help here. I'm asking for your help. Please join me in welcoming to the stage, all together now, Howdy Modi! Turn the banners on! Howdy!
Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Oh, they moved it, I guess. Ladies and gentlemen, let's hear it for the members of Congress and governors who have joined us here today. On behalf of the most diverse and welcoming city in the United States, Mayor Sylvester Turner presents the key to the city of Houston, the energy capital of the world, to Prime Minister Modi in recognition of the exceptional relationship between the people of India and the people of Houston.
Ladies and gentlemen, now a few words from the House Majority Leader, the Democratic Congressman from Maryland, Mr. Steny Hoyer. Hello, Houston. Hello, America. I am so pleased to be in Houston today with all of you and with the Prime Minister. And with all of you, I will be keeping my thoughts with all those affected by the terrible flooding that has occurred here in Houston. We pray for them. We think of them. I pray for their safety and thank all those who have reached out in kindness and in courage on their behalf. Like all of you, I'm honored to join in welcoming Prime Minister Modi to the United States. To the United States, of which, of course, we in Maryland think Houston is a part. अमेरिका का एक भाग है। प्रधानमंत्री जी, मैं कांग्रेस की तरफ से आपके लिए बधाइयां लेके आया हूं और हमारे स्पीकर की तरफ से भी आपके लिए विशेष बधाइयां लेके आया हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मेरे बहुत पुराने मित्र भी मौजूद हैं और कई हजार लोग, और हम सभी का लक्ष्य एक ही है और वो है हमारे बीच जो बढ़ती साझेदारी है, भारत और अमेरिका के बीच की जो साझेदारी है, इसका हम जश्न मनाएं। दो ऐसी लोकतांत्रिक देश हैं जो कि एक ही भविष्य के विजन के प्रतिबद्ध हैं और आप जानते हैं कि हम सभी के साझी अपेक्षाएं हैं और साझी सपने हैं भविष्य के लिए। बहुत ही दोनों ही देशों में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का बहुत प्रभाव रहा है और हम सब ये समझते हैं कि स्वतंत्रता कितनी कीमती होती है। हमारी सभी लोग समान बनाए जाते हैं और हमारे जो भगवान है, हम सभी को समान प्रकार के अधिकार के साथ हमें पैदा किया। हमारा एक विजन है जो अभी तक पूरी तरीके से साकार नहीं हुआ है, जो कि हम पूरे बड़े हमारे महान देशों के बीच में भी पूरा नहीं हुआ। हमारी जो संविधान है उसमें सबसे पहले एक ही से 3 शब्द लिखे गए हैं, वो हैं हम जो लोग हैं, जो इस जगह के लोग हैं, वी द पीपल। भारत की स्वतंत्रता के पिताश्री श्री महात्मा गांधी जी, जिनकी 150वीं सालगिरह इस अक्टूबर 2 तारीख को मनाई जाएगी, वो बोलते थे कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जो कमजोर लोगों को उतनी ही अवसर देता है जितने कि शक्तिशालियों को देता है। और ये महात्मा गांधी जी के ही शब्द हैं। और यही मेरे दोस्तों, जो कि हमारी आइडियल होती है अमेरिका की लोकतंत्र की और भारत की लोकतंत्र की, ये सब इसी के मायने रखता है। और समान अवसर मिलने चाहिए सपने देखने के, मेहनत करने के लिए, ताकि उनके सपने साकार हो सकें।
मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और पूरी आशा है कि आप सबको भी गर्व हो रहा कि अमेरिका और भारत की संबंध, जिसमें कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही कार्य करते आए हैं ताकि दोनों देश के संबंध गहन हो जाए और हमारे जो साझे संविधान सिद्धांत हैं उनके प्रति हम कर सकें। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक नया राह शुरू करी थी भारत और अमेरिका के बीच के संबंध की। प्रेसिडेंट बुश, कहाँ से है प्रेसिडेंट बुश? उन्होंने और मजबूती दी हम दोनों देशों के बीच के संबंधों को, और प्रेसिडेंट ओबामा ने उनको और गहन बनाया। और इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी प्रयास को आज के दिन भी आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 25 साल हो गए हैं जब से कांग्रेशनल कांग्रेस ऑन इंडिया और इंडियन अमेरिकन की स्थापना हो गए हैं। अमेरिका और भारत ने सहयोग हर तरीके से, जिससे कि आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गई, काउंटर टेररिज्म, सुरक्षा, अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन, इन सभी क्षेत्रों में हम साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी ने भी 10 साल पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। 2008 में हमने परमाणु समझौता को पारित किया हमारे संसद में और भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में दर्जा दिया है। देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत गर्व है कांग्रेस की जो भूमिका है इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए, और जो भारतीय अमेरिकी जो कांग्रेशनल प्रतिनिधि है, आपका परिचय अभी कुछ उनमें से कुछ के साथ किया गया। राजा जी, कमिला जयपुर, अमी बारा और रोखाना, और मुझे बहुत गर्व है जो अन्य कांग्रेस के सदस्यों का यहाँ परिचय किया गया। मैं बहुत खुशी की बात है कि वे सब यहाँ हैं। तो हमारे जो जन संपर्क है ये हमें और अधिक करीब लाते हैं। भारतीय अमेरिकी जो है वे बहुत ही असाधारण योगदान कर रहे हैं अमेरिका में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब और लाखों अन्य अमेरिकी भारतीय, आप ही कारण है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। आप ही कारण है इस बात का कि बहुत सारे अमेरिकी लोग जो है वे भारत की ओर देखते हैं और एक साझेदार के रूप में भारत को देखते हैं, और यही नहीं, एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में भी देखते हैं। इस देश में भारतीय अमेरिकी लोगों ने बहुत ही मजबूत समुदाय स्थापित किए हैं, जिन्होंने अपने पड़ोसियों का स्वागत किया है। उन्होंने कई योगदान किए हैं, कई पेशेवर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी वे बहुत योगदान कर रहे हैं, बहुत अंतर कर रहे हैं अमेरिका में। और वे हमारे सेना में और हमारे सरकार में भी काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में भारतीय अमेरिकी लोगों ने नवाचार को बढ़ावा दिया है और प्रेरणा भी उन्होंने दी है सभी को। उन्होंने अपने अमेरिकियों, जो बाकी उनके अमेरिकी साथी हैं, उन्होंने उनकी समझ बढ़ाई है भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के लोकतंत्र की जीवंतता के बारे में। देवियों और सज्जनों, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। मेरे काउंटी में, जो हम सेंट मैरीज काउंटी को कहते हैं, इस काउंटी को काफ़ी समृद्ध किया गया है एक बढ़ते भारतीय समुदाय की वजह से। हमारे जो मेरी जो पड़ोसी हैं डॉक्टर विनोद शाह, जो यहाँ आए हैं मेरे साथ, जो प्रधानमंत्री के साथ यहाँ हैं, ये मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं, भरोसेमंद दोस्त हैं। इनका बहुत आदर किया जाता है और हमारे समुदाय में उनका बहुत आदर है। मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, वे मेरे परिवार के हिस्से हैं। मैंने भारत का दौरा किया है मेरे दोस्त विनी शाह के साथ।
बहुत ही यह एक अद्वितीय देश है और असाधारण लोग हैं वहाँ के, और इनके माध्यम से मैंने कई अन्य अमेरिकी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मुझे गुजरात के बारे में पता चला, भारत के बारे में पता चला, उनके लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, और जो चुनौतियाँ हैं भारतीय अमेरिकी समुदाय का यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनकी चुनौतियाँ, उनकी जो सफलताएं हैं, और आप सब, हम सब की ओर से मैं जो हजारों यहाँ भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने बहुत योगदान किया है अमेरिका में, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने महान देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए बहुत योगदान दिया है, और आप अमेरिका को भी एक और अधिक मजबूत राष्ट्र बनाने में आपका योगदान है। देवियों और सज्जनों, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत टेक्सास में कर रहे हैं। हम आधुनिक भारत से प्रेरित हैं जिनका वो नेतृत्व करते हैं, और हम भारत की चुनौतियों के बारे में अवगत हैं, और भारत अंतरिक्ष की बेप्रगति कर रहा है और गरीबी का उन्मूलन भी कर रहा है, और शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, और ऊर्जा प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि और अधिक स्वस्थ और अनुकूल भारत हो। और अमेरिका के अपने परंपराओं पर बहुत गर्व है। भारत में भी हम महात्मा गांधी की शिक्षा से और नेहरू जी की शिक्षा से प्रेरित हैं। मानवाधिकार का आदर है, बहुलवाद का आदर है, और अमेरिका और भारत हमें एक साथ मिलकर काम करना है ताकि हमारे जो सारे वादे हैं हम उनको पूरा करें हमारे नागरिकों के प्रति। और स्वतंत्रता से पहले नेहरू ने गांधी के मिशन की प्रशंसा की। हर आंसू को आप मिटाइए उनके लोगों के आंखों से, और उन्होंने एक वचन किया भारत के भविष्य के लिए, जब तक लोगों के आंखों में आंसू है, जब तक पीड़ा है, कष्ट है, हमारा काम पूरा नहीं होगा और हमारे देश का काम पूरा नहीं होगा। और जब उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि सभी के प्रति सद्भाव होना चाहिए, और हम एक न्यायपूर्ण स्थायी शांति चाहते हैं हमारे बीच, और सभी राष्ट्रों के साथ एक साथ मिलकर हम लोग, भारत के लोग और अमेरिका के लोग, हम एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे, विश्व को प्रेरित करते रहेंगे ताकि हम शांति की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम आगे बढ़ें बिना किसी प्रकार के दुर्भावना के साथ, और हर आंख से आंसू हमें मिटाना है। और जो हम लोग जिनका जन्म या तो भारत में हुआ या अमेरिका में हुआ, या उन लोगों के जो बेटे हैं, बेटियां हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, हमें उनके लिए काम करना है। हमें किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं होना है, हर एक के आंखों से आंसू पोंछना है, और हम बहुत महान देश बनेंगे, न्यायपूर्ण बनेंगे। यह जो हमारा मिशन है जो अधूरा है, इसी वजह से हम यहाँ आज टेक्सास में आए हैं, और ये हमारी साझी आशा है कि हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम दो महान लोकतंत्र हैं, दो इतिहास हैं, एक साझेदारी, एक सपना, एक बेहतर भविष्य के लिए।